come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. Shehzad Poonawalla, it's the media's fault. Why do we go and ask these questions? It is the election commission's fault. It's never the Congress or the Vipaksh's fault, because Jammu and Kashmir, we lap up the results. After all, we are forming government. Telangana, Karnataka, we lap up. Lok Sabha polls also interesting, very nice, because 240 BJP, not the 350, 400 that the BJP was calling it. All of those times, the EVM, their batteries are fine. They go kharab only when the opposition begins on the losing spree. This is called Naach Na Aaye Angan Teda. Yeah, if I can give an example, Tehseen will relate with that. When the student has not prepared for the examination, then he will continuously blame, my pen was not working, paper hi aisa aa gaya, today I was not feeling well. So Tehseen knows these examples even more perfectly, because he has given them to my mother also, when every time he used to not be able to pass the exam. Anyways, this is called conditional commitment to constitution. That means I like constitution, I like EVM, I like ECI, I like judiciary when the verdict is in my favor. If the verdict is not in my favor, then I will abuse the same institutions. This means, look, Punjab EVM fine, Delhi EVM fine, Bengal EVM fine, Jammu Kashmir EVM fine, Haryana EVM not fine, Karnataka EVM fine, Tamil Nadu EVM fine, Telangana EVM fine. But now suddenly they are feeling Maharashtra we will lose. But at least one thing I've seen, pre-poll alliance and post-poll alliance तो सुना होगा नाविका जी. Pre-poll बहाना and post-poll बहाना. हरियाणा में post-poll बहाना था, क्योंकि वहां पे तो उनको लगा 8:30 बजे तक जलेबी बांटनी है. अब जलेबियां बट गई, नतीजे कुछ और आ गए, तो पोस्ट-पोल में उन्होंने जाके गालियां दी सबको, और फिर कुमारी शैलजा को भी अपमानित किया. उन्होंने चुनाव हराया ये तक बोल दिया. आज उन्होंने एडवांस में ही एक एलिबाई क्रिएट कर ली है, प्री पोल, इसको बोलते हैं प्री पोल एलिबाई. तो प्री पोल एलिबाई हैज बीन क्रिएटेड. अच्छा, मजेदार बात यह है, तहसीन एक भी दिन कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे. इन हिज होल लाइफ ही हैज नॉट बीन सिंगल डे मेंबर. ही इज सेइंग दैट वन मेंबर हु हैज बीन राज्यसभा एमपी राशिद अलवी इज नॉट ऑफिशियल. उदित राज हु हैज कंटेस्टेड ऑन लोकसभा टिकट ऑफ कांग्रेस इज नॉट ऑफिशियल. जयराम Ramesh, whose media head, is not official. Tehseen Poonawalla, who has not spent single day in Congress, is saying official version of Congress. Only Congress can allow this. And lastly, Tehseen is not at least he's smiling contritely. At least he's smiling contritely. I give him full marks for being I also a give him sport. full marks, because और कोई एग्जाम में तो फुल मार्क मिला नहीं, तो इसी एग्जाम में फुल मार्क मिल जाए. पर ये एग्जाम में फुल मार्क लेते हुए तहसीन पूनावाला, बताइए, ये शरद पवार जी है. अब पता नहीं शरद पवार को क्या बोलेंगे अब ये. I won't blame EVMs. This is when Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, these people lost. That time also this EVM brigade had gotten up. अब महेश तपासी जी से तो मेरे पुराने संबंध है, मैं उनको मेरा लीडर भी मानता हूं. महेश जी बताइए, शरद पवार जी को भी खारिज कर रही है राशिद. सुन लीजिए, अरे इतनी उत्तेजना क्यों है? These are people who put परिवार तंत्र above लोकतंत्र. 80 चुनाव राहुल गांधी हारा है, 80 चुनाव. भारत जोड़ो यात्रा के बाद 11 चुनाव, पर बेटा में नो दोष, ईवीएम डेटा को गाली दो. दिस इज द परिवार तंत्र माइंडसेट ऑफ. Well, when you talk of Parivar Tantra, well, breaking news just coming in. Once again, the Congress party has reiterated that Priyanka Gandhi Vadra will contest from Wayanad. So, you know, they've made it official that she will be contesting. पर वहां पे इंडिया अलायंस लड़ने वाला है. Who's the India Alliance candidate in Wayanad? Kerala से कांग्रेस. We've heard the explanation before. We've heard the explanation before. तपासे जी से पूछे, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट कौन है? प्रियंका जी या लेफ्ट?